Ar-Rahman-Ar-Rahim. Assalamu alaikum. In this video, we will be studying one concept, that is complement of a set, and after that, we will be solving one question from exercise. Let's start with the complement of a set. If U is a universal set, U is a universal set, and A is any set which is any set which is subset of U. By subset of U means all the elements of A belongs to U, right? And U is kind of a bigger set. By the word universal means something bigger. So U is the universal set and A is a part of U, means A is a subset of U. It is also written as like this: A is a subset of U, right? Now the complement of A, it is denoted by A dash, or it is also written as A superscript of small c. A complement like this or like this. So by complement of A means A complement is equal to U minus of A, and that is equal to one set. The elements in this set, or you can say the elements which belongs to A complement will be x such that x belongs to U and x does not belongs to A. This is the set of A complement. For example, if U is equal to the universal set, we consider 1, 2, 3 till 10, and A is equal to, A can be any set which should be a subset of U. Let it be 2, 4, 6 and 8. And we are supposed to take the complement of A. We'll write it as A complement, which will be equal to U minus of A, and that will be equal to 1, 2, 3. We'll write U first, minus, and then A, 2, 4, 6, 8. So we will remove all the elements of A from U. So 2, 4, 6, 8 will be cancelled from here, and we'll write down the remaining elements of U. 1, 3, 5, 7, 9 and 10. So these are the elements of A complement. It is basically a difference of any set with the universal set, right? In simple difference में हम क्या करते हैं, कोई से भी दो सेट का डिफरेंस ले लेते हैं. But while finding out the complement of a set, we take the difference with the universal set, right? Let's solve the question now. Okay, question number is 4 from exercise 5.1. Okay, let me write down the question. If U means now it is universal set, U is equal to x such that x belongs to natural number, and अब वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक के लिए हैं वो उन्होंने हमें रेंज बताई है. 3 is less than x is less than equal to 25. Right? Now what we are going to do, we'll be writing down, we'll be listing down, make a list of all the elements which are in the universal set. So U will be equal to, or in other words, we'll be writing down the universal set in descriptive form. This type of form which is given, it is called the set builder form. So now we are going to write down the universal set in the in the tabular form. Okay, so the elements are from the natural numbers, and what is the restriction is, okay, 3 is less than x means x is greater than 3. So it will be greater than 3 means 4, 5, 6, 7, so on. Now let's see the upper limit. It should be less than equal to 25. So this means 24 and 25. So all the elements from 4 to 25 are in the universal set. Now let's write down the other set which is given in the question. Set X, it is given as in the question. I'll be mentioning the same thing. Set X is equal to x such that x is prime, and what will be the restriction? 8 is less than x and x is less than 25. So the restriction is कि हमारे पास the very first thing is the set of prime numbers. Prime numbers वो numbers होते हैं जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो जाते हैं. So x is equal to, क्या restriction है?
8 is less than x means x is greater than 8. So इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? प्राइम नंबर्स आएंगे 11, 13 and then you have 17, 19 and then you have 23. So हम 25 से आगे नहीं जा सकते, right? This is the restriction. So this is set x. Now we'll be writing down the other set which is given in the question, y set. X such that x belongs to whole numbers. W stands for whole numbers. And now what is restriction? 4 is less than equal to x is less than equal to 17. So अब हमारे पास क्या है? Let's write down the elements. Y is equal to the set of whole numbers, and what is the restriction? That x is greater and equal to 4, right? You can say ये आप इस तरह ना 4 is less than equal to x, so इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है x is greater and equal to 4. That is one and the same thing. You can read it in either ways. Okay, so आपके पास क्या आ गया? x is greater and equal to 4 means अब यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 से. कहाँ तक लेके जाना है? 17 तक. 4, 5, 6, 7 and so on till 16 and 17. राइट जब हम ये इस तरह कब लिखते हैं? जब हमें पता होता है कि बीच के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं. अगर इरेगुलर ऑर्डर है तो फिर हमें सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बट अगर प्रॉपर एक ऑर्डर में चल रहा है और सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में, तो हम ये डॉट्स डाल सकते हैं. So what we have done so far, we have converted the set builder form to the tabular form. Now we'll be further doing with their sums. So the first part is, let's write down the first part. First part is x union y whole complement, right? So now we'll be dealing with the complements. Okay, x union y whole complement means that u minus of this thing. We'll be solving the bracket first, right? So हमने क्या करना है? Whatsoever is inside the bracket of whole complement, उसका हमने ले लेना है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है. बिकॉज हमें अभी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि u में से हम वो सेट माइनस कर देते हैं. सो u में से हमने ये वाला जो सेट है ये हमने माइनस कर देना है. सो फर्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड आउट x union y, right? So let's find out the x union y. x union y में हम पहले क्या लिखेंगे? सेट x के एलिमेंट्स लिखेंगे 11, 13, 17, 19 and 23. And then union y set के एलिमेंट्स 4, 5, 6 so on till 17. अब हमारे पास क्या है x union y में? I hope you remember the definition of union. By union means we have to combine the elements of both the sets, ठीक है? और हमने सेट के कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं करना. तो अब आप देखें 4 से लेके 17 तक तो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, राइट? 4, 5, 6 टिल लेट्स से 17. और 17 से आगे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ ये तो पूरे हो गए ना उसके अंदर. अब जो 17 से आगे एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 19 एंड 23. ये आपके पास बन गया x union y. Now we'll be finding out the x union y whole complement. So we'll be writing down x union y whole complement, that is equal to, this implies that u minus of this thing, x union y. So we'll be writing down universal set now. It is 4, 5, 6 till 25 minus अभी जो हमने फाइंड आउट किया है ये वाला सेट, ये जो हमने फाइंड किया ये लिख देते हैं 4, 5, 6 so on 17, 19 and 23. So what we are going to do now, हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से ये सेट माइनस कर देना है, ठीक है? अब आप अगर गौर से देखें तो 4 से लेके 17 तक तो यहाँ से वैसे ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है? 17 के बाद अब देखें यहाँ पे जो बच जाएगा वो करते हैं 18, राइट? यहाँ से जो एलिमेंट्स बच गया वो 18, 19 कैंसिल हो गया, 20, then 21, then 22, then 23 कैंसिल हो गया, then we are left with यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया 24 and 25. So these are the elements जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को, ये आपके जो पास जो फाइंड किया है यूनिवर्सल सेट में से हमने ये वाला सेट जब माइनस कर दिया, ये एलिमेंट्स निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट के वो ये थे, राइट? I hope you understand the sum.
Okay, now we will be solving part number 2 of question number 4. Now if you see, I have just made the list of the all the elements which are given in these set. So U was universal set, उसके अंदर आपके पास elements थे from natural numbers, और X set आपके पास prime numbers का था, and then Y set आपके पास whole numbers का था. Let's solve the second part now. सेकेंड पार्ट में हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट. सो इफ यू सी दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्री ऑपरेशंस. द फर्स्ट इज x कॉम्प्लीमेंट, then y complement, and then intersection of both these sets. So we will be finding out the x complement now. X complement means universal set minus x, right? So first we'll be writing down the universal set 4, 5, 6 and 24, 25 minus the set x 11, 13, 17, 19 and 23, right? So we will be removing these elements of x from the universal set so that we can find out the x complement. अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 4 से लेके, देखें इससे पहले वाले तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 4 से लेके 4, 5, 6 टिल 10 तक तो एलिमेंट्स आएंगे. उसके बाद कौन सा वाला कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे 11 वाला एलिमेंट कैंसिल हो गया, 13, 17, 19, 23 ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए. सो विल बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. अब हमने देखना है कि ये एलिमेंट्स ना आएँ और बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएँ. सो 11 नहीं आएगा, देन 12, 13 कैंसिल, देन 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कैंसिल, 18, 19 भी नहीं आएगा, ठीक है, 20, 21, 22, 23 भी नहीं आएगा, ठीक है, एंड देन 24 एंड 25. सो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये एक्स सेट के एलिमेंट्स को ख़त्म कर दिया और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो बच गए वो हमने लिख दिए. ओके, नाउ आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट इज़ वाई कॉम्प्लीमेंट. वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से आपने वाई को माइनस कर देना है वाई के एलिमेंट्स को. सो यू विल राइट डाउन यूनिवर्सल सेट फर्स्ट. So 24, 25 and then minus and then universal set 4, 5, 6 till 17. Okay. Now let's cancel out the elements. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाले elements जो है 4, 5, 6 till 16, 17 and in between these all elements ये जो है यहाँ से cancel out हो जाएंगे. So 17 तक तो elements वैसे ही ख़त्म हो गए. So now we'll be writing down the remaining elements of universal set आफ्टर कैंसलेशन. 17 तक ख़त्म. नेक्स्ट इज़ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25. ये एलिमेंट्स जो आगे हमारे पास किस में आ गए, वाई कॉम्प्लीमेंट में, राइट. सो हमारे पास कौन सा हो गया, एक सेट हमारे पास, लेट्स से इफ आई राइट, एक सेट हमारे पास ये वाला हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट और एक सेट हमारे पास ये वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया. Now we are supposed to find out the x complement intersection y complement. So अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेट फाइंड आउट किए हैं एलिमेंट्स वो हम जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं. फर्स्ट वी विल राइट x complement 4, 5, 6 till 10, then 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Then the intersection with y complement, जो y complement find किया है, this one. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. So by intersection we means we just have to write down the common elements, right? So और intersection में आप देखें जब आप common निकालते हैं तो आपके पास कम चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि सारे एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हो. सो ओनली द कॉमन एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू राइट. सो इफ़ यू सी 18 इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर, 18 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर, देन 20 इज़ प्रेजेंट, देन 21, then you have 22 and then 24 and 25. So we will be writing just the elements which are common to both the sets. So it will be 18, 20, 21, 22 and then 24 and then 25. So this is how you're supposed to find the x complement intersection y complement, right? First you have to find out the x complement, then y complement and then the intersection of both.
I hope you understand the sum. Okay. Now we will be doing third part of question number 4. And third part is x intersection y whole complement. So we'll be solving. Solution is x intersection y whole complement means u minus of x intersection y, right? So हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, we have to take the difference of that with the universal set. And first of all we'll be finding x intersection y. So we'll be writing down the elements of set x first, and then intersection with y. Y is 4, 5, 6 till 17. The intersection means the elements which are just common to both of these sets, right? So the only elements which are common to both of these sets will be, अभी देखिए 17 तक है ये, ठीक है, तो ये इनकी तो बात ही नहीं होगी. So the only common elements which are present in both of these sets will be 11, 13 and 17, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर तमाम के तमाम ये elements मौजूद हैं. So let's write it down. So the only common elements are 11, 13 and 17. Now what we are going to take? We are going to take the complement of this, that is we are going to subtract, or you can say we are going to take the difference of this. Let's say if I write it over here, u minus of x intersection y, right? So u is 4, 5, 6, 24, 25 minus 11, 13 and 17. Okay, difference means you are going to subtract, you are going to remove these elements from the universal set. So only these three will be removed, remaining will be written as it is. So from 4, 5, 6 you can say till 10 to as it is aa jayega. Then we have 11 removed, 12, 13 removed, 14, 15, 16, 17 removed, 18, 19 and so on, 24 and 25. ठीक है, ये बीच के भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे. So this is the x intersection y whole complement. First you are going to take the x intersection y, and then you will be taking the complement of it, that is you will be removing this set from the universal set and you will be writing down the remaining elements of the universal set in the complement of that set. I hope you understand the sum. Now we'll be finding out the last part of question number 4. X complement, y complement and then the union of both, right? So we'll be finding x complement first. We have already found out the x complement in the second part of the same sum. So let's find it again. X complement means u minus of x. We'll take the difference with the universal set. So we'll be writing down the universal set first, 4, 5, 6 till 24, 25 minus the elements of set x, 11, 13, 17, 19 and 23. So complement means, or difference means you are supposed to remove the elements of the second set from the first set. So 11, 13, 17, 19, 23 यहाँ से निकाल देंगे तो जो remaining elements बच जाएंगे. Let's write them down. 4 से लेके 10 तक तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है. अगर आप यहाँ से देखें तो ये एलिमेंट्स 10 से पहले पहले हैं. सो 4, 5 टिल 10 तक तो आना ही है. 11 निकल गया बीच में से, 12, 13 निकल गया, फिर 14, 15, 16, 17 निकल गया, देन 18, 19 निकल गया, 20, 21, 22, 23 निकल गया, 24 and 25. So these are the elements of set x complement, right? Now we'll be finding out y complement. Y complement means यूनिवर्सल सेट में से y के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. सो 4, 5, 6 विल बी राइटिंग डाउन यूनिवर्सल सेट फर्स्ट एंड माइनस y में एलिमेंट्स लिख देते हैं 4, 5, 6 टिल 17. अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास अब देखें 4 से लेके 17 तक ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से निकल गए, राइट. सो जो पीछे एलिमेंट्स बच गए वो कौन से होंगे? 18, 19, 20, 21 एंड टिल 25, ठीक है. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट में बच गए, सॉरी u में बच गए, वो हमने y कॉम्प्लीमेंट में डाल दिए.
89, 20, so on. Now what you are supposed to find, we are supposed to take the union of these two sets, right? So x complement union y complement. So we are going to write down the set of x complements. So 4, 5 till 10, then 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, comma 25, bracket close, union y complement 18, 19, 20, 21 and 22, 20, 24, 25 तक, right? So union means you are supposed to combine the elements of both the sets, right? अब अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास, सिंस वी आर सपोज टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स कंबाइंड इन द कंबाइंड मैनर, सो 18 से पहले पहले जो एलिमेंट्स है वो यहाँ तक, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स राइट देम डाउन फर्स्ट. So because we are supposed to combine all the elements 4 5 till 10, ठीक है? then 12 14 15 16 and 18, ठीक है? अगर आप देखें तो 13 यहाँ पे 17 वो यहाँ दूसरे सेट में भी नहीं है, राइट? अच्छा, अब 18 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे तो 20 आ रहा है बट यहाँ पे 19 मौजूद है, तो वो आ जाएगा 20, दोनों में एक दफ़ा लिखा जाएगा 21, ठीक है जी? देन आपके पास आ जाएगा सो ऑन, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आगे सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं. हालांकि इधर 23 नहीं है लेकिन यहाँ पे मौजूद है, सो इस वजह से वो इस सेट में यूनियन में आ जाएगा. सो 21, 22, देन यू कैन से 23, 24 एंड 25, राइट? सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन बाय कॉम्प्लीमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम, ठीक है? You just have to we have calculated complements, union and intersection in this question before. Thank you so very much. Allah Hafiz.